Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Lingo Zone. Now let's learn the second half. So let's start. Cover the wound. जख्म को ढांपना. Bandages can help keep the wound. पट्टियां जख्म को रखने में मदद कर सकती हैं. Clean, साफ and keep harmful bacteria out और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में. पट्टियां जख्म को साफ और नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचाने में मदद कर सकती हैं. After the wound has healed enough, जख्म के काफी मुंदमिल होने के बाद to make infection unlikely, खराबी से बचाव के लिए exposure to the air, हवा में खुला छोड़ देना will speed wound healing, जख्म की बेहतर होने की रफ्तार को तेज कर देगा. जख्म के काफी मुंदमिल हो जाने के बाद खराबी से बचाव के लिए जख्म को हवा में खुला छोड़ देना जख्म की मुंदमिल होने की रफ्तार को तेज कर देगा. चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी की तब्दीली. चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, पट्टी को कम अज कम रोजाना तब्दील करें और या व्हेन एवर, जब कभी इट बिकम्स वेट और डर्टी, ये गीली या गंदी हो जाए. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, अगर आप बहुत सारी पट्टियों में से चिपकने वाली पट्टी से परेशान होते हैं, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, बगैर चिपकने वाली पट्टी इस्तेमाल करें और या स्टेराइल गॉज या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी हेल्ड लगाएं इन प्लेस विद पेपर टेप, उस जगह पर पेपर टेप के साथ. गॉज रोल और आर लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, जालीदार रोल या ढीले ढाली लचकदार पट्टियां. अगर आप बहुत सारी पट्टियों में चिपकने वाली पट्टी से परेशान होते हैं, बगैर चिपकने वाली पट्टी इस्तेमाल करें या उस जगह पर पेपर टेप के साथ जरासीम से पाक जालीदार पट्टी, जालीदार रोल या ढीली ढाली लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें. These supplies, ये अशिया जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल दस्तयाब होती हैं एट फार्मेसीज पर, ये अशिया आमतौर पर फार्मेसीज पर दस्तयाब होती हैं. वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, खराबी के निशानात का देखना. सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलिए. इफ द वुंड इज नॉट हीलिंग, अगर जख्म बेहतर नहीं हो रहा. और यू नोटिस एनी रेडनेस, और अगर आप किसी किस्म की सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, तकलीफ में इजाफा, ड्रेनेज, जख्म का बहना, वांत, गर्माहट और स्वेलिंग या सूजन देखते हैं. अगर जख्म मुंदमिल नहीं हो रहा या आप किसी किस्म की सुर्खी, तकलीफ में इजाफा, जख्म का बहना, गर्माहट या सूजन देखते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए. चलिए तो आप देखते हैं फर्स्ट एड किट किन किन चीजों पर मुश्तमिल होती है. फर्स्ट एड किट. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box. हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल को एक काबिल रसाई इब्तदाई तिबी मदद का डिब्बा रखना चाहिए. With the following recommended basic contents, दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया के साथ. हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल को दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ काबिल रसाई इब्तदाई तिबी मदद का डिब्बा रखना चाहिए. फर्स्ट एड बुक, पहली चीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एड बुक क्लियरली वाज़ह तौर पर एक्सप्लेन्स, बयान करती है हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए. वाज़ह तौर पर बयान करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए. सेकेंड चीज इज बैंडेड्स, प्लास्टर्स. बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स. बैंडेड्स या चिपकने वाले प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए बेहतरीन है. बैंड एड्स या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों की पट्टी के लिए बेहतरीन है. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. वो मुख्तलिफ अशकाल और जिसामत में आते हैं, उंगलियों, टांगों या जिस्म के किसी भी हिस्से में जहां पर आपको छोटे जख्म आए. Make sure
اس بات کو یقینی بنائیں the band-aid is big enough to cover the wound. اس بات کو یقینی بنائیں کہ بینڈ ایڈ اتنا بڑا ہونا چاہیے جو زخم کو ڈھانپ لے. If not, you should use a dressing instead. اگر وہ زخم کو نہیں ڈھانپتا تو آپ کو اس کی بجائے پٹی استعمال کرنی چاہیے. Elastic bandages, لچکدار پٹیاں. The elastic bandages are good for wrapping, لپیٹنے کے لیے. Sprained, موچدار joints, جوڑوں کو. اور making a sling, یا بنانے کے لیے a sling, ایک رسی. In the case of a broken arm, ایک ٹوٹی ہوئی بازو کے سلسلے میں. لچکدار پٹیاں موچدار جوڑوں کو لپیٹنے یا ٹوٹی ہوئی بازو کی صورت میں ایک رسی بنانے کے لیے بہترین ہے. Gauze and adhesive tape. Gauze pads or rolls are cloth pads and are placed directly on a wound. Gauze pads, جالیدار pads اور rolls یا roll are cloth pads, کپڑے کے pads ہیں that are placed directly, جو براہ راست رکھے جاتے ہیں on a wound, ایک زخم پر to protect, حفاظت کرنے کے لیے and control, اور قابو پانے کے لیے bleeding, خون کے بہاؤ پر. جالیدار پیڈ یا رول کپڑے کے پیڈز ہیں جو کہ خون کے بہاؤ کو قابو کرنے اور ایک زخم کی حفاظت کے لیے براہ راست رکھے جاتے ہیں. کہاں رکھے جاتے ہیں؟ for larger cuts and scrapes, بڑے زخموں اور بڑی خراشوں پر. You will need adhesive tape to keep the gauze in place. آپ کو جالیدار پٹی کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے ایک چپکنے والی ٹیپ کی ضرورت ہوگی. In an emergency, ہنگامی حالت میں a clean cloth, ایک صاف کپڑا, hand towel, دستی تولیہ, clean t-shirt, صاف ٹی شرٹ can be used, استعمال کی جا سکتی ہے to cover the wound, زخم کو ڈھانپنے کے لیے. ایک ہنگامی حالت میں ایک صاف کپڑا, دستی تولیہ, صاف ٹی شرٹ زخم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. Antiseptic wipes, alcohol swabs and cotton wools. Safety pins and tweezers. Scissors, a pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. ٹیپ اور جالیدار پٹی کو کاٹنے کے لیے ایک کینچی کی ضرورت ہوتی ہے. Latex gloves. Latex gloves are always a good idea. Latex gloves ہمیشہ ایک بہترین خیال ہے, especially خاص طور پر if you are dealing, اگر آپ نبٹ رہے ہیں with body fluids, جسم کی رطوبتوں سے from a stranger, ایک اجنبی کی. Latex gloves ہمیشہ ایک بہترین خیال ہے, خاص طور پر اگر آپ ایک اجنبی کی جسم کی رطوبتوں سے نبٹ رہے ہیں. Calamine lotion. Calamine lotion is used for soothing sunburns and stings. Calamine lotion دھوپ کے جلے اور ڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Clinical thermometer. Analgesic tablets such as aspirin اور paracetamol, جیسے کہ aspirin اور paracetamol. So that's all, dear students. You have come to know that which basic elements, which basic products should be inside in a first aid box. So یہاں پر چیپٹر نمبر 4 فرسٹ ایڈ کی ٹرانسلیشن مکمل ہوتی ہے. Never forget to like, share and subscribe Lingoson to receive upcoming videos. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.